हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइसिस। दिस इज विकास कुमार। और आज चलिए हम लोग क्या बात करते हैं। हम लोग कैसे आई बनाएंगे, आई को हम लोग कैसे सेट करते हैं, कितना मेजरमेंट हम लोग करना पड़ता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आई कैसे बनता है, नोज़, लिप्स, ईयर्स, इस सब के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। चलिए उसके आगे मैं अब करता हूँ। सो हम लोग जब पहले कोई पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं, उसका पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, आई। वो आई चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फेस में। अगर वो आपका बहुत अच्छा बनेगा तो आपके फेस भी बहुत अच्छे बनेंगे। सो मैं पहले आई पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बीच में लिया और ये 2 पॉइंट मैंने बीच में लिया। तो ये जितना आपका इस पॉइंट से डिस्टेंस है उतना ही ये पॉइंट डिस्टेंस है। मतलब आपका ये पूरा एक जो सिंगल लाइन है, ये समझिए कि इसके बीच से ये चीज़ बाइसेक्ट कर रहा है। सेम इतना मेज़र का हम इधर ले लेंगे और इधर भी। जब हम कोई फेस बनाते हैं तो फेस के बीच में जो ये हम यहाँ पे आपके नाक बनेंगे, आपके यहाँ नोज़ आएंगे और आपके इधर में आई होंगे और इधर में आई होंगे। आपके बीच में जितने डिस्टेंस होते हैं वो एक आई के बराबर होता है। जिसका आप फेस बनाइएगा तो इसका जितना बड़ा आई होगा एक, उतना बड़ा दूसरा भी होगा और बीच में उतना ही डिस्टेंस रहेगा। मतलब आपको 1, 2 और 3 ये 3 आइज इसमें आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सो अब मैं इसमें सेट करके आपको दिखा रहा हूँ सेट कैसे करेंगे।
सो गाइस मैंने ये आई कंप्लीट कर दिया। देखिए मैंने इसमें क्या किया है, हर बार में मैंने टोन चेंज करते गया है। देखिए मैंने पहले क्या किया था, पहले HB से यूज़ किया था, फिर उसके बाद 2B मैंने यूज़ किया, फिर 4B 6B, लास्टली मैंने 6B से ये आई में डार्क किया है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और आप थोड़ा थोड़ा ये सेट करेंगे ना तो आपको ये आइडिया खुद हो जाएगी कि कहाँ हमें डार्क करनी है, कहाँ लाइट करनी है। आप कुछ फोटो देखोगे तो उसमें आपको खुद आइडिया होगा कि हाँ हम आर्क बनाएंगे ना किसी का, तो उसमें कैसे सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे। और सेटिंग का तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था मुझे कैसे सेट करना है, तो उसी तरह से आप सेटिंग करेंगे। सो चलिए अब आगे हम लिप्स बनाते हैं। अब लिप्स से फोकस करेंगे। लिप्स में पहले क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट लेंगे और फिर एक बीच में, ये आपका रफ के लिए होगा। हाँ और आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि देखिए मैंने इसमें क्या किया था, जो लाइन किया था मैंने रफ के लिए वो बाद में मर्ज हो गया, वो दिख नहीं रहा है बीच में, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये इतने लाइट होने चाहिए कि आपको बनाते बनाते वो खत्म हो जाए, मिक्स होकर। जैसे देखिए मैंने ये लाइट, ये हाँ ये जो पेंसिल से मैंने इतना लाइट किया, इसको आप ऐसे से हाँ चलते चलते देखिए साफ हो गया, पता नहीं चल रहा है ना यहाँ पे कुछ लाइन है, ऐसे आपको करने हैं। तो ये आप ऐसे ध्यान रखेंगे सब छोटे छोटे चीज़। सबसे करते हैं तो ये लिप्स में हम थोड़ा ये लाइनिंग देंगे, समझे, जिस इसके स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए चीज़ें। और ये डार्कनेस देते हैं हम लोग चेहरे में स्माइल को शो करने के लिए, क्योंकि देखिए जब स्माइल करते हैं तो कुछ डिम्पल जैसे बनती है ना, उसी चीज़ को शो करने के लिए हम लोग ये सब यूज़ करते हैं सेट का। सो आपके लिप्स कंप्लीट हो गए। सो अब नोज़ बनाएंगे। तो नोज़ में फोकस करना है आपको। आप इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
सब सेट करता हूँ। तो यहाँ पे नोजल है और एक आपका ईयर बच गया, ईयर को बनाता हूँ मैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही पास बना दिया था, इसलिए मैंने बीच में इरेज कर दिया कि आपको पता समझ में आए कि हाँ ये 2 ईयर्स है। ईयर्स हो गए, ये नोज, ये लिप्स और ये आईज। सो गाइस, मैंने ये आपको 4 बता दिए और आपको क्या करनी है होमवर्क में, आपको इस चारों को, क्योंकि देखिए फेस में जो जो इंपॉर्टेंट होती है मैंने बता दी है। आइज इंपॉर्टेंट होती है, लिप्स इंपॉर्टेंट होती है, नोज और ईयर्स, चारों चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपको फेस का कटिंग हो गया। तो फेस कटिंग मैं आपको होमवर्क में यही दे रहा हूँ कि आपको पहले इस चारों को प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको इस चारों को मिलाकर एक फेस बनाना है खुद से। आप कितना इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़ मुझे देखनी है। तो आप होमवर्क में आपको वही करनी है कि एक फ्रंट पोर्ट्रेट बनाओ। आपका होमवर्क रह गया है वो, मेक अ फ्रंट फेस ऑफ बॉय और गर्ल। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किसका फेस बनाते हो। सो आपको ये होमवर्क कंप्लीट करनी है और उसके बाद मेल करो। आप मेल में पूछ सकते हो, मेल में मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कौन से कहाँ गलती है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।